Hello friends, today we will discuss about part 3rd of our Indian Constitution, and under part 3rd we will discuss article number 21, which is protection of life and personal liberty. In this video, along with the discussion of protection of personal liberty and life, we will discuss few aspects of Gopalan case and Menaka Gandhi case, and what Supreme Court had given the statement on the above cases and on article 21. So let's start this video. Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except procedure established by law. It means, friend, that no one can deprive your protection of life and personal liberty except procedure established by law. The law which establishes few procedure regarding your restrictions, which may be only imposed, and otherwise no one can deprive you from getting this right. So, and the right is available to both citizen and non-citizen. This right is available to both citizen and non-citizen. In my previous video I already told you that which of the article is for only citizen of India and which among the article is for both foreigner and our Indian citizen. So if you don't watch that video, please go and check that video and get information about that thing. Now, in the famous Gopalan case, that is 1915, the Supreme Court has taken a narrow interpretation of Article 21. गोपालन केस, जैसा कि आपको मालूम है कि 1950 में हुआ था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मतलब उतना वाइड रूप में जो है कि उसको इंटरप्रेट नहीं किया था, काफ़ी छोटा स्टेटमेंट दिया था उस पर. इट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केवल ये जो है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में ही आपको ये जो है कि प्रोटेक्ट करेगी, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट में नहीं करेगी. लेकिन जब हम लोग मेनका गांधी का केस देखेंगे तो उसमें इसका ठीक अपोजिट बोला गया है. वो क्या बोला गया हम लोग जस्ट अभी देखेंगे, लेकिन आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ. This means that the state can deprive the right to life and protection of personal liberty of a person based on law. It means that state can stop you from getting this right, or state can stop you from enjoying this right. It does not means that state means only state, Bihar, Bengal. It's not, friend. State means the government and the government authority, which I already discussed in my previous video, in which we will discuss on that what is the ground for becoming a state. So please watch that video, and now move on to our next statement, that is given in the M Laxmikanth book about protection of life and protection of life and personal liberty. That is this is because of the expression procedure established by law in article 21, which is different from expression due process of law contained in American Constitution. See friends, in Article 21, one statement you already listen, that the procedure established by law, and which is different from the American Constitution, which says due process of law. And according to procedure established by law, the protection of life and personal liberty can only work against the executive action, not against the legislative action. Hence, the validity of law that has prescribed a procedure cannot be questioned on ground that the law is unreasonable, unfair, or unjust. Secondly, the Supreme Court held that the personal liberty means only liberty relating to person or body of individual. And this is in above statement we discuss about the protection of life, that is from the executive action only, not from the legislative action. And about the personal liberty, Supreme Court in Gopalan case of 1950, they said that the uh, personal liberty means only liberty relating to persons or body of individual, means liberty relating to your body, and no other aspect is taken in that cases. But when we talk about Menka case in 1978, the Supreme Court overruled its judgment in Gopalan case by taking a wider interpretation of Article 21. It means that whatever the Supreme Court has given the judgment in Gopalan case, they overrule it by the judgment of Menka case in 1978.
and in this they have taken a wider interpretation regarding article 21. So what are those interpretation? Let us check. Therefore, it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law, provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair, and just. In other words, it has introduced the American expression due process of law. In effect, the protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action. So फ्रेंड्स, जैसा कि गोपालन केस में था कि उसमें केवल जो है कि वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में ही जो है कि आपको ये राइट को आप इंजॉय कर पा रहे थे, लेकिन अब मेनका के केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो दोनों के अगेंस्ट में मिलेगा। आपको जो है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में भी मिलेगा और लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट में भी मिलेगा, और इस तरह से ये जो है कि आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहलाता है। इन इफेक्ट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। ये मैंने दोबारा इसलिए रिपीट किया ताकि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो, और इसे जो है कि आप अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक हो तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। Further, the court held the right to life as embodied in Article 21 is not merely confined to animal existence or survival, but it includes within its ambit the right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living. Friends, और इसके अलावे जो कोर्ट ने इसमें बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब जो है कि वो ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड है, कि एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए जितने भी सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कवर करेगी। जितने मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड और इंसान के ज़िंदगी से जीने के लिए जितने भी मीनिंगफुल चीज़ हैं उन सारे चीज़ों के लिए, और वो क्या क्या है वो हम आपको नीचे एक लिस्ट भी बताएंगे अभी, जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। It also ruled that the expression personal liberty in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of rights that go to constitute the personal liberty of a man. The Supreme Court has reaffirmed its judgment in Menaka case. In the subsequent cases, it has declared that following right as part of Article 21. तो मेनका गांधी केस में जो है कि फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने 24 स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने बोला कि ये 34 स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने बोला कि ये 34 स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा जो है कि आर्टिकल 21 के अंदर में आएगा। वो क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, आप चाहें तो जो है कि आप इन सभी को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। डैट इज़ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने बताया कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंदर में आएगा। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। आई डोंट थिंक कि आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको जीने का अधिकार है, आपको प्राइवेसी का अधिकार है, आपको शेल्टर लेने का अधिकार है, आपको हेल्थ का अधिकार है। सॉरी फॉर द इशू विथ quality of the video. If you have any doubt regarding quality, you can increase the size of this video. So now the next which is just a statement given by Supreme Court regarding protection of life and personal liberty is that right to education up to 14 year of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment. हैंडकफिंग मीन्स फ्रेंड्स आपको हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। ये एक्चुअली में फ्रेंड्स ये आपका जो है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भी आता है आपका। सो उस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, जो कि आपका आर्टिकल 23 हो जा रहा है, तो उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पर कवर करते हैं। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, कस्टडी में लेने के बाद आपको हरास नहीं किया जा सकता। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
right not to be driven out of a state, right to fair trial, right of prisoner to have necessities of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, यानी कि पब्लिक में आपको फांसी नहीं दिया जा सकता है, राइट टू हियरिंग, आपको सुनने का अधिकार है, आप कुछ भी सुन सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, राइट ऑफ अपील और फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, right against barfetter, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to electricity. फ्रेंड्स, ये जो राइट टू स्लीप है, इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो उस दौरान पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है जब तक कि वो नींद से जग ना जाए। उसको जो है कि उसे नींद से जगने के लिए वेट करना पड़ेगा। सो ये काफ़ी मतलब ब्रॉड एरिया है इसका, और ये बहुत ही अच्छा एक तरह से जो है कि स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने कि लाइफ जीने के लिए हर एक एस्पेक्ट्स को जो है कि बारीकी से उन्होंने उसका अध्ययन किया और फिर ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको ये सारे स्टेटमेंट जो है कि एक बार नोट कर लेने चाहिए। सो आई होप कि आपका डाउट जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग ख़त्म हो गया होगा। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इट इन योर कमेंट बॉक्स, और you can message me on my Instagram account. So thank you for watching this video, and friends, this is my new YouTube channel, so please support us by subscribing my YouTube channel. Thank you once again very much.